प्रिय विद्यार्थियों, आज लिटरेरी टर्म एलेग्री, जिसको हिंदी में रूपक कहते हैं, एलेग्री को हम डिस्कस करेंगे। ये बीए पार्ट 3 के सिलेबस में डिस्क्राइब्ड है। सबसे पहले व्हाट इज़ एन एलेग्री, डेफिनेशन की बात करेंगे हम। एन एलेग्री इज ए स्टोरी, पोएम और पिक्चर कैन बी इंटरप्रेटेड टू रिवील ए हिडन मीनिंग, typically a moral or political one. So, as a literary device, an allegory is a narrative in which a character, place, or event is used to deliver a broader message about real world issue and occurrences. Authors have used allegory throughout history in all forms of art to illustrate or convey complex ideas and concepts in ways that are comprehensible or striking to its viewers, readers, or listeners. Writers and speakers typically use allegories to convey hidden or complex meanings through symbolic figures, actions, imagery, or events which together create the moral, spiritual, or political meaning the author wishes to convey. Many allegories use personification of abstract concepts. So, allegory is a poem or picture which can be interpreted to reveal a hidden meaning, typically a moral or political one, or a story in which the characters and events are symbols that stand for ideas about human life, or a political or historical situations, a symbolic representations of something else. So, एलेग्री रूपक क्या है? रूपक एक कहानी, एक कविता अथवा एक तस्वीर होती है जो कि किसी छिपे हुए अर्थ को उजागर करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। विशेष रूप से किसी नैतिक अथवा राजनीतिक अर्थ को व्यक्त करने के लिए एलेग्री का प्रयोग किया जाता है। अथवा रूपक एक कहानी होता है जिसमें पात्र होते हैं, घटनाएं, पात्र और घटनाएं प्रतीक होते हैं जो कि मानव जीवन के बारे में अथवा एक राजनीतिक या ऐतिहासिक स्थिति के बारे में विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं अथवा किसी अन्य घटना का प्रतीकात्मक रूप से, सिंबॉलिक रूप से प्रस्तुतिकरण करते हैं। Allegory is a literary device in which characters or events in a literary, visual, or musical art form represent or symbolize ideas and concepts. कि रूपक एक ऐसी साहित्यिक तकनीक है, एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस है जिसमें पात्र, जिसमें कैरेक्टर्स हैं और घटनाएं हैं, चाहे साहित्यिक हों, दृश्यात्मक हों, संगीत रूप में विचारों और
धारणाओं को प्रतीकात्मक रूप में, सिंबॉलिक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। Let's take a closer look to allegory. Simply put, an allegory is a story. यदि हम सीधे साधे रूप में कहें तो रूपक एक कहानी होता है। Allegory is a story but not just any story. सिर्फ एक कहानी ही नहीं होता। Allegories are stories. वो कहानियाँ होती हैं that have characters, जिसमें characters होते हैं, that have settings and events that represent something completely different than what is in the story. रूपक एक ऐसी कहानियाँ होते हैं जिसमें पात्र होते हैं, सेटिंग होती है, घटनाएं होती हैं जो कि कहानी के घटनाक्रम से अलग किसी अन्य तथ्य या पूरी अन्य तथ्य का पूरी तरीके से प्रतिनिधित्व करते हैं। Now the examples of allegory. Examples of allegory abound in literature. In fact, you no doubt have already read many. Below, we will look at some examples of allegory you may be familiar or why they are allegories. Aesop's Fables. One of the first example of allegory that most people read and understand as an allegory is the collection of short stories known as Aesop's Fables. While there are many fables given to us from Aesop, a Greek writer who lived almost 2600 years ago, a few are most prominent in many of our minds because of their strengths in allegories. This was the first example of allegory, the stories of Aesop. The tortoise and the hare. This classical fable from Aesop tells the story of a plucky hare who acts the bully and teases tortoise for being so slow. Tortoise challenges hare to race, and because of hare's more overconfidence and laziness, wins. While this story can be enjoyed as just a fun story where a turtle sorry, turtle beats a rabbit in a foot race, it is obviously meant, like all other fables from Aesop, to teach a lesson, and therefore this story is considered as an allegory. The hidden meaning or moral here is that some people are born with natural talents but waste them to idleness or laziness. The tortoise character is meant to show how, despite natural talents, perseverance, hard work, and focus can win the day. Adults read this fable and see both the tortoise and hare as people they know in real life or have heard about it. The race, read allegorically, is actual life itself. See the story for yourself below and try to read it allegorically. So, these are the examples of allegory. ये एलेगरी की कहानी है, ये उदाहरण है
जिसमें हम शुरू से पढ़ते हैं कछुए और खरगोश की कहानी।